Do you think any diagnosis is perfect at this point of time, allopathic diagnosis? You have an idea that allopathic diagnoses are perfect, but no, none of the allopathic diagnoses are perfect. So, Okay. एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डायग्नोसिस जो है वो फिजिकल डायग्नोसिस से ज्यादा बेटर आप अपने आप को डायग्नोस कर सकते हैं. सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ the physical parameters, or the moment you analyze anything quantitatively, if you analyze matter quantitatively, you will see that it changes every moment. For example, if you test your TSH is 12.5 at 7 o'clock in the morning, do you think your TSH will be same at 8 o'clock? These parameters are variable. These parameters are variable. And the variable, you take your blood sugar test from right hand and left hand. Both of them will show a different number. You take it right hand, right leg, left leg. All the four different. ये चारों अलग अलग होंगे. तो आप कौन सा स्टैंडर्ड मान रहे हो और क्यों मान रहे हो? नहीं, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट जो है, मैं आ रहा हूं उस पे, मैं आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं. तो पहले आई एम ट्राइंग टू ब्रेक योर आइडिया ऑफ व्हाट इज परफेक्ट डायग्नोसिस, है ना. पहले इसको हटा, कीप योरसेल्फ अ लिटिल ओपन. नाउ यू आर फीलिंग पेन, टेल मी which diagnosis will tell that you are in this much of pain? Is there a diagnosis for pain? Is there a diagnosis for discomfort? When you say, there are many issues like infertility, and many people have undiagnosed infertility, but they have infertility. Which diagnosis will tell that I love this person more than this person? So when you think about life in terms of qualitative or in terms of qualitative apparatus or qualitative manner, अगर क्वालिटेटिव मैनर में अगर आप अपने आप को देखेंगे ना, तो आप ज्यादा अच्छा निदान और डायग्नोसिस कर पाएंगे, which no allopathic diagnosis can do. So they only do quantitative measurements, which is variable. एक वेरिएबल चीज को, नदी का पानी लेके आप कहते हैं ये नदी का पानी है, मगर वो पानी तो कब का वैसा आगे निकल चुका होगा. In 24 hours, the nadi is completely washed out. So next क्या आ रहा होगा उसके बारे में आप नहीं बता सकते. So quantitative analysis is the biggest farce, जिसकी वजह से एलोपैथिक डॉक्टर्स को नहीं समझ में आ रहा why we are not able to handle 80% of disease, because fundamentally they are wrong. तो दूसरी बात, अब सेकंड पार्ट आते हैं. What we are doing is, we suppose आप सांस नहीं आ रही आपको, you are not able to take breath and you are feeling अनकंफर्टेबल फील कर. नाउ इसका कोई डायग्नोसिस नहीं होता कि व्हाई यू आर नॉट एबल टू इनहेल प्रॉपर्ली. डायग्नोसिस किस चीज का होगा? इफ देर इज ब्लॉकेजेस इन योर lungs or not. So if there is no blockages in your lungs, you have some fear because of which, कोई डर की वजह से आपकी सांस नहीं आ रही है, तो इसका कोई डायग्नोसिस नहीं होता. तो वो डर किस वजह से आ रहा है? वो डर किस वजह से आ रहा है कि आपके अंदर, दिस इज समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली डू एन एक्सपेरिमेंट फॉर योरसेल्फ एंड सी, एंड वी हैव लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल्स अबाउट दैट. लोग जो जिनको की दे वर फियरफुल, जिनको डर लगता था, उनको पैल्पिटेशन जल्दी हो जाता था, कोल्ड स्वेट जल्दी आ जाता था, एंजाइटी बहुत जल्दी हो जाती थी. एंजाइटी का कोई टेस्ट नहीं है, एंजाइटी जल्दी आ जाती थी. दे डू कुंभक फॉर फ्यू मंथ्स एंड देयर एंजाइटी गोज ऑफ, देयर फियर गोज ऑफ, उनका डर खत्म हो जाता. दे से उनकी नींद नहीं आती थी, वो नींद आने लग गई, बिकॉज यू आर नॉट, योर ब्रेथ इज नॉट स्मूथ. यू विल सी, यू विल गेट इनटू इंसोम्निया सिचुएशन. डर की वजह से इंसोम्निया होता है और उसके लिए डर का कोई इलाज नहीं है, मगर आपको बेहोश किया जाता है रोज ताकि आप सो सकें.
तो उससे आपका डर बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। तो जो गोलियां आप खा रहे हैं ना, उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कम नहीं होती। So, but if you take care of that fear factor, and why you are fearful, because your body is not robust. एक मजबूत शरीर को डर कम होता, और उससे जुड़ा हुआ एक मजबूत मन। तो व्हाट वी आर डायग्नोसिंग, हम क्या डायग्नोस कर रहे हैं? हम ये डायग्नोस कर रहे हैं, पहली चीज ये, सपोज वी मेक यू डू सम एक्सपेरिमेंट विथ योर ब्रेथ, सांस आपकी कितनी ले पाते हैं, तो वी टेस्ट द स्ट्रेंथ फैक्टर्स ऑफ योर बॉडी थ्रू इट। इससे आपके बॉडी का स्ट्रेंथ फैक्टर्स टेस्ट करते हैं। इससे आपका हमको पता चलता है कि आपका हार्ट का फंक्शन कितना होगा। बिकॉज ऑफ दैट वी ऑल्सो गिव यू मेक यू डू अ लिटिल एक्सपेरिमेंट, जो आपके बॉडी के साथ में कितना मूव कर पा रहे हैं, कितना उठा पा रहे हैं, कितना बेंड कर पा रहे हैं। वी आर जस्ट टेस्टिंग द फोर्स फैक्टर्स, द स्ट्रेंथ, द फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, थ्रू विच you can actually recover yourself, or if it is weak, you get into a disease. So we are just trying to see what factors have become weak in you, because of which you have got into a particular disease or multiple disease. And you do this experiment also. You actually post a photograph so that we can see what state of mind you are in. If you are doing an experiment, will you be able to do the right experiment, say us the right thing, share the right thing? That also we do as a second line of जैसे कहते हैं ना कि हम ये ध्यान रखते हैं कि अगर ये बंदा इस स्थिति में आ गया where he can't do things, we don't trust those experiments, rather we do it in a completely different manner, which is just by looking at you, just by looking at a person or looking at a child, you can say what state the child is in. What does the child want? So it's another kind of a diagnosis, because it has an esoteric element involved in it. We don't say it, हम इसको बताते नहीं हैं. But there are practical experiments which says a lot about you, और आपके अंदर कौन से फैक्टर्स वीक हैं उसके बारे में बताते हैं. तो वो हम डायग्नोसिस कर रहे हैं. That is why we say this is not an allopathic diagnosis. This is a completely different kind of a diagnosis. We are actually coming up with lot of diagnoses like those diagnoses, which by using technology will come up with those kind of diagnosis later on, because it needs a lot of experimentation. There is a technology involvement also, but it will not be a quantitative one. It will always be a qualitative one. Through qualitative analysis, we go deeper in the subtle aspects of life. Through quantitative, we can't do that. Through photograph, can you diagnose the actual state of that particular person? Yes. Through photograph, it can be easily diagnosed. There are a lot of people who can say everything about you just by looking at you. Chodo, but we don't want to go there. We make you do a little experiments, and we take it as a criteria.